Very good morning, students. I hope you all are doing great in your studies and revised your previous chapter. Today, we are going to do our chapter 2, which is Generations of Computer. So, without wasting any further time, let's start it. The name of our chapter is Generations of Computer, and the topics which we will discuss in this lesson are first generation computers from 1940 to 1956, second generation computers 1956 to 1963, third generation computers 1964 to 1971, fourth generation computers from 1971 to present, and fifth generation of computers is present and beyond. So the history of computer development refer किया जाता है to with respect to the different generations of computer. यहाँ पे जो साइज है कंप्यूटर का वो डिक्रीज हुआ है ड्रास्टिकली एंड द स्पीड स्टोरेज कैपेसिटी एंड reliability have increased manifold. So each generation of computer is marked by a major technological development. कंप्यूटर की जो different generations हैं, हर generation में कुछ अच्छा technological development उसके अंदर हुआ है, as well as उनका जो size है वो decrease हुआ है. Now first generation computers 1940 to 1956 की जो generation है, इसमें arrangement हुआ of vacuum tubes which was used in the computers. Some feature of first generation computers were they were expensive and slow, they were very heavy and slow, their programming capacity was very low, ये consume करते थे बहुत ज़्यादा electricity which generated a lot of heat. Then inputs were given in the form of punched cards and paper tapes. यहाँ पे paper tapes और punched cards की help से input provide किया जाता था. ADVAC, Mark 1, ENIAC, EDSAC and UNIVAC 1 are some examples of first generation computers. So first generation computers में we have EDVAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. इसके इन्वेंटर कौन थे? जॉन पर्सपर एक्कर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉशली. ये इन्वेंट हुआ था इन ईयर 1944. इसके फीचर्स थे कि इसका जो वेट था वो अप्रोक्सीमेटली कितना था? 8000 किलोग्राम. ये स्टोर करता था बोथ प्रोग्राम्स एंड डेटा. ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो बाइनरी सिस्टम को यूज करता था. मार्क 1 इसके इन्वेंटर थे Howard H. Aiken and it was developed in the year 1944 and इसके फीचर्स थे कि the first fully automatic calculator and ये slow था in performing calculation. Then we have ENIAC which is electronic numerical integrator and computer. इसके इन्वेंटर थे John Presper Eckert and John W. Mauchly and it was also developed in 1946 and इसका फीचर्स ये थे कि इसका वेट था more than 27,000 किलोग्राम. ये पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था. ये केपेबल था ऑफ सॉल्विंग वाइड रेंज ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड यहाँ पे कोई भी स्टोर्ड प्रोग्राम्स नहीं थे. Then we have EDSAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक. इसके इन्वेंटर थे प्रोफेसर एम विल्क्स and it was developed in year 1949. इसके फीचर्स थे कि इसका वेट था approximately 6000 किलोग्राम एंड ये पहला फुल साइज स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था. Then we have UNIVAC 1 यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1. इसके डेवलपर्स थे जॉन प्रिस्पर एक्कर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉशली एंड इट वाज इन्वेंटेड इन द ईयर 1951. इसके फीचर्स थे दैट इसका वेट था अप्रोक्सीमेटली 13000 किलोग्राम. सेकेंड कमर्शियल अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था. ये हैंडल्ड बोथ नंबर्स एंड अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स प्रॉपर्ली. फिर आता है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स विच वाज फ्रॉम 1956 टू 1963. इन दीज जो कंप्यूटर्स थे वहां पे ट्रांजिस्टर्स वर सोल्डर्ड टू सर्किट बोर्ड. इसके फीचर्स क्या थे? यानी कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ था इन द प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब. तो इसके फीचर्स थे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कोबोल एंड बेसिक वर डेवलप्ड इन दिस जनरेशन. ये स्मॉलर थे, चीप थे एंड फास्टर थे देन दी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. इनपुट्स जो थे वो यहाँ पे दिए जाते थे इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड्स एंड प्रिंट आउट्स वर रिसीव्ड एज आउटपुट. ENIAC 1401, IBM 700, CDC 160 and IBM 1401 are some examples of second generation of computer. ट्रांजिस्टर्स क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसको यूज किया जाता है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1964 एंड 1971. यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया गया था इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन दीज कंप्यूटर. तो इसके फीचर्स क्या थे? ये जो कंप्यूटर्स थे ये एग्जीक्यूट कर सकते थे एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन एंड दे वर कॉल्ड जनरल पर्पस कंप्यूटर्स. They were smaller, cheaper, faster and more accurate than the second generation computers. They had more storage capacity. इनकी जो storage capacity थी वो भी ज़्यादा थी. Keyboards were used to input data and monitors were used as output devices. IBM 360, ICL 1900 and VEC 750 are some examples of
third generation of computer. Fourth generation of computer was from 1971 to present, and fourth generation computer were used from 1971 and they are being used till present. Microprocessors का use क्या था in this computer? इसके features थे that they are more advanced. ये वाले computers और ज़्यादा advanced थे in terms of processing and memory capacity. They are smaller, cheaper and faster than the third generation computers. ये जो थे इनको हम homes और offices में भी use करते थे. They led to the development of personal computers. Fourth generation में ही हमारे पास personal computers का यानी कि PCs का development हुआ. IBM 4300, ICL 2900 and HP 9000 are some examples of fourth generation computers. The term artificial intelligence was coined by John McCarthy in 1956 at the Massachusetts Institute of Technology. Now fifth generation of computers यानी कि present and beyond. Fifth generation computers जो है they are still in developing या फिर development stage. तो एप्लीकेशन जैसे वॉइस रिकॉग्निशन इनका यूज किया जा रहा है इन टूडेज वर्ल्ड. टेक्नोलॉजी यूज फॉर दिस जनरेशन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इस जनरेशन में जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एक एबिलिटी होती है किसी भी कंप्यूटर की टू थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग. द यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपरकंडक्टर हेल्पफुल है यहाँ पे टू मेकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ रियलिटी. जो गोल है हमारी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग का वो है टू डेवलप डिवाइसेस जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज इनपुट्स को रिस्पॉन्ड करेंगे एंड केपेबल होंगे ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन. सम फीचर्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर कि वो इंटेलिजेंट है लाइक ह्यूमन बींग्स, दे आर एबल टू थिंक एंड टेक डिसीजन लाइक ह्यूमंस, दे आर यूज्ड इन एरियाज जैसे रोबोटिक्स एंड डिफेंस. IBM सुपर कंप्यूटर कॉल्ड डीप ब्लू उसने डिफीट किया था एक वर्ल्ड चेस चैंपियन को गैरी कैस्परो इन अ चेस मैच व्हिच वाज हेल्ड इन May 1997. Let's compare the generations of computer. So first generation, second generation, third generation and fourth generation. फीचर्स क्या क्या है? पहले अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ, सेकेंड जनरेशन में देवर ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर्स. देन इनपुट ले अगर हम तो फर्स्ट जनरेशन में इनपुट कैसे दिया जाता था? पंच कार्ड्स और पेपर टेप्स की हेल्प से. सेकेंड जनरेशन में पंच कार्ड्स का यूज हुआ, थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड एंड फोर्थ में कीबोर्ड एंड माउस. आउटपुट में फर्स्ट जनरेशन में हमें आउटपुट मिलता था प्रिंटर, सेकंड में भी प्रिंटर, थर्ड में हमें मॉनिटर और प्रिंटर बोथ एंड फोर्थ में भी मॉनिटर एंड प्रिंटर बोथ. देन मेमोरी, तो फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम्स होते थे फॉर मेमोरी, सेकंड में भी मैग्नेटिक ड्रम्स होते थे एंड थर्ड और फोर्थ में भी मैग्नेटिक डिस्क्स का यूज किया जाता था. ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा. तो फर्स्ट जनरेशन हमारे जो कंप्यूटर्स थे उनका साइज कैसा था? वेरी ह्यूज था. सेकेंड जनरेशन में स्मॉलर देन द फर्स्ट जनरेशन, थर्ड में और ज्यादा स्मॉलर देन द प्रीवियस जनरेशन एंड फोर्थ में स्मॉलर देन द प्रीवियस जनरेशन. नाउ स्पीड की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन की स्पीड कैसी थी? स्लो, सेकेंड की थोड़ी फास्ट, थर्ड की फास्टर देन द प्रीवियस जनरेशन एंड फोर्थ की अगेन फास्टर देन द प्रीवियस जनरेशन. कॉस्ट, जो कॉस्ट थी हमारी वो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में बहुत ज्यादा थी, एक्सपेंसिव थी, सेकेंड जनरेशन में लेस देन द फर्स्ट जनरेशन, थर्ड में और लेस हो गई एंड फोर्थ में और लेस हो गई. एग्जाम्पल्स, फर्स्ट जनरेशन में वी हैव ENIAC and UNIVAC, second में IBM 704 and IBM 1401, third में IBM 370 and NAV 7500 and fourth में we have Intel Premium Core i3 and Macintosh. There is an activity which says match the columns. So it will be IDVAC first generation computer है, so vacuum tubes. Then IBM 4300 transistor second generation computer. Robotics में artificial intelligence because it is the fourth generation. Then we have IBM 700 which used microprocessors, third generation, and VEC 750's integrated circuits. Let's do the exercise of the chapter. First is pick the correct option. So the first fully automatic calculator was Mark 1. Now an arrangement of dash was used in the first generation computer, vacuum tubes. Dash had no stored programs. EDSAC was invented in 1949. Let's do true false. Voice recognition is an application of fourth generation computers. True. Fifth generation computers are able to think and take decisions like humans. True. Professor M. Wilkes invented UNIVAC in 1949. False. And punch cards were used in only first generation. False. Let's do fill in the blanks. Dash were used instead of transistors in third generation computer. Integrated circuits.
Dash generation computer were used between 1942 to 1956. First generation. IBM 4300, ICL 2900 and HP 9000 are examples of third generation computer. Second generation computer were used between 1956 and 19. So students, this was your complete chapter. I hope it is clear to you. Do revise your chapter again and learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.